Ashar, your maths teacher, and in today's session, what are we gonna do? So, students, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about trigo. Yes, we have to solve sums based on trigo. We have to move ahead. And आज के सेशन में क्या है? So, students, आज के सेशन में हमें ट्राइंगल लॉ के ऊपर सम सॉल्व करने हैं. So, it is an interesting topic, students, but before starting this interesting topic, let me give you a brief idea about Eduauraa. So, students, what is Eduauraa? We all know that Eduauraa is what? Eduauraa is basically a digital learning platform. It is a digital learning app जो आपको ऑफर करता है क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑल ओवर इंडिया. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बराबर, वो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं है, बहुत कुछ है. तो क्या क्या है? सो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है. So when you download this app, you will come to know that it provides courses for students who are appearing from 6th to 12th, JEE, NEET, IIT and other competitive exams, and spoken English. And not only this much, when you will download this app, you will come to know कि Eduauraa provide करता है e-books, provide करता है mind maps, subjective questions, past year papers and MCQs, 2D and 3D interactive videos and performance monitoring reports भी. So ये सब कुछ एक ऐप के अंदर मिलता है आपको बच्चों. तो आपको क्या करना है? आपको ऐप डाउनलोड करना है and you have to start watching the lectures. But along with this, you have one good news, students, and the good news is what? The good news is that when you download this app, you will get a 14 days free trial. So when you get this 14 days free trial, so you have to take the maximum use of it. You have to make the maximum use of it, students. Yes, 14 days free trial में जितना हो सके वीडियो लेक्चर्स देखो, ई बुक्स पढ़ो, माइंड मैप्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मेक योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग. So students, this was about Eduauraa. Now coming back to our topic, students. So आज के सेशन में, as we discussed earlier, we will be discussing about trigo, the next part, and that is the questions based on your triangle law. So remember one thing, students. You can apply this triangle law sums only if it is mentioned in your question in triangle ABC. अगर in triangle ABC mention नहीं किया है तो आप ये triangle law की formula apply नहीं कर सकते. Now sums based on this triangle law is basically a complete formula based sum. And यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल लॉ की फॉर्मूला नहीं अप्लाई करनी, यहाँ पे सब फॉर्मूला एक साथ आएंगे. यहाँ पे आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन एंड कंपाउंड एंगल, सब फॉर्मूला एक साथ आने वाले हैं. If you are strong with your formula, you will be able to solve sums based on this. So students, without wasting any time, let's start with the first question. And what is the first question? तो students, हमारा first question यहाँ पे क्या है? So हमारा first question है, in triangle ABC, prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2 minus sin 2c is equal to 4 cos A into cos B into sin C. So how do you consider? Now students, let us consider left hand side. So when we consider left hand side, what is our left LHS? So our LHS is sin 2A plus sin 2B minus sin 2C. Now when two trigo terms are in addition, if there is a plus sign between two trigo terms, we always apply factorization formula. So let us consider first two terms. So जब हम पहले दो term consider करते हैं, sin 2a plus sin 2b, मतलब sin plus sin. What is sin plus sin? Sin plus sin is 2 sin cos. तो वो हो जाएगा 2 sin 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2. 2 कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा? 2 sin 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2
माइनस साइन 2c एज इट इज। नाउ यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन 2c। यहां तक पता चला। नाउ व्हाट डज योर ट्रायंगल लॉ फॉर्मूला से? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन सी। सो यहाँ पे instead of 2 sin a plus b, we will get sin c. So we will get the next step as 2 sin c into cos a minus b minus sine 2c. Now you have sine c, you have sine 2c. Now it is difficult to convert sine c into sine 2c, but it is easy to convert sine 2c into sine c. क्या यूज करना है? We have to use half angle formula. What is half angle formula? Sine 2 theta. Sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. So apply that formula. तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 sine c into cos c. Now if you see properly, 2 sin c कॉमन निकलेगा. So when you take 2 sin c कॉमन, अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos of a minus b minus cos c. Now as I mentioned earlier, it is all about your formula. हर एक स्टेप पे फॉर्मूला अप्लाई किया है. अगर आप फर्स्ट स्टेप देखोगे फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, सेकंड स्टेप देखोगे ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, थर्ड स्टेप देखोगे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, फोर्थ स्टेप में कॉमन लिया, फिफ्थ स्टेप में you have cos a minus b, you have cos c. Now cos c in terms of triangle law वापस क्या हो जाएगा? sin a plus b हो जाएगा, cos a plus b हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 sin c into cos of a minus b. Now check your right hand side. Right hand side में क्या चाहिए? Right hand side में we need 4 cos a cos b into sin c. Now we already have sin c. क्या missing है? Cos a और cos b. Now cos a minus b as it is वहां पे कुछ नहीं कर सकते, but cos c को triangle law की help से लिख सकते हैं. Now what is cos c in terms of triangle law? It is minus of cos a plus b. So minus minus plus हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा plus cos of a plus b. Now if you see properly, cos of a minus b plus cos of a plus b, इसे देख के किसी की याद आई? Yes, I am talking about formula. Which formula? It is your defactorization formula. So cos a plus b plus cos a minus b क्या होता है? 2 cos a cos b. So next step defactorization formula लगा, तो यहाँ पे मिला 2 sin c into cos a into cos b into 2. So next step क्या मिलेगा? 2 2s are 4. So 4 sin c into cos a into cos b. When we rearrange this term, we get 4 cos a into cos b into sin c, which is nothing but your right hand side, hence proof. And this is how we solve our sum. So students, I hope you understood कैसे करना है. Yes, what are the steps? यहाँ पे you have some standard steps जो generally normally we use. क्या step है? सबसे पहला step है हम factorization formula अप्लाई करते हैं. After applying factorization formula, next step में normally half angle formula अप्लाई होता है, फिर common निकलता है, फिर triangle law अप्लाई होता है, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के बाद वापस डिफैक्टराइजेशन अप्लाई होता है, डिफैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद you just have to multiply your terms. So these are your standard general steps, standard general methods where you can solve sums based on triangle law. So students, I hope समझा कैसे करना है. Let's move on to the next question. And what is the next question? So हमारा next question है, in triangle ABC, prove that cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 times sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2. Now, how do you solve this? The question says you have to prove, that means left hand side और right hand side same है. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, मतलब यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें आंसर पता है क्या लेके आना है. सो लेट्स कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, whichever way you are comfortable with. Now I will use left hand side. So the moment we use left hand side, what is given to us in our LHS? It is given cos A plus cos B plus cos C. Now
इफ देयर इज प्लस बिटवीन टू ट्रिगो टर्म्स, क्या यूज करना है? फर्स्ट स्टेप क्या बोला था? फैक्टराइजेशन. सो व्हाट इज कॉस प्लस कॉस? टू कॉस कॉस, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू. तो यहाँ पे मिलेगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी as it is. Now, what is 2 cos a plus b by 2? Now, यहाँ पे अगर आप देखोगे cos a minus b by 2 will remain same. It will be as it is. But if you see cos a plus b by 2, so cos a plus b by 2 is basically, can we write this as cos of 90 minus c by 2? So ये हो जाएगा sin c by 2. Now, when we write this as sin c by 2, what is the next step? So, when we write this as 2 sin c by 2 into cos a minus b by 2 plus cos c. Now if you see properly, first step क्या बोला था? फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है, फिर अप्लाई करना है ट्रायंगल लॉ, और उसके बाद जनरली थर्ड टर्म के साथ हम क्या करते हैं? थर्ड टर्म में हाफ एंगल अप्लाई करते हैं. सो इफ यू सी sin c by 2, you have sin c by 2, you have cos c. सो cos c को कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ एंगल में. सो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास हाफ एंगल कॉस का 4 फॉर्मूला है. व्हाट आर दैट 4 डिफरेंट फॉर्मूला? एक है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो ये चारों फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला हमारे सम को मैच कर रहा है? एज आई मेंशन्ड अर्लियर स्टूडेंट्स, which trigo formula to use, where, when, why and how, it is not on us. It is basically the need of that sum. So in this particular case we will apply half angle formula of cos. Which formula? 1 minus 2 sin square. The reason is we have sin c by 2 here. So the next step will become 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 as it is, प्लस cos c को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2. नाउ राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए था, 1 मिल गया, तो पहले 1 को पहले लिख दो, ये 1 आ गया. नाउ व्हेन वी कंसीडर दिस टू टर्म्स, तो यहाँ पे 2 साइन c बाय 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 साइन c बाय 2 कॉमन लिया, अंदर बचा cos ऑफ a minus b by 2 minus sine of c by 2. Now students, what should be the next step? Now if you see properly, 1 चाहिए था राइट हैंड साइड में, मिल गया. 2 sin c by 2 चाहिए, मिल गया. क्या चाहिए? Now we are left with sin a by 2 and sin b by 2. So what is sin c by 2 in terms of triangle law? So in terms of triangle law, sin c by 2 is basically cos a plus b by 2. Now the next step will become 1 plus 2 sin c by 2 as it is into cos of a minus b by 2, no change as it is, and minus sin c by 2 is basically what? It is basically minus cos a plus b by 2. So if you see here, cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2, इसे देख के कोई फॉर्मूला बनता है? Yes, your defactorization formula. What is cos minus cos? It is minus 2 sin sin. So students, from this what do we get? So from this we get the next step as 1 plus 2 sin c by 2 into sin a by 2 into sin b by 2. And if you see your right hand side, yes students, your right hand side is what? So your right hand side will be 1 plus 2 2s are 4 sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2, which is nothing but your right hand side.
hence proved, and this is how you solve your sum. So students, I hope you understood how to solve this. Yes, can we move on to the next question? So tell me what should be the next question. And students, before starting the next question, what are the steps? As I mentioned earlier, there are standard general steps. सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन अप्लाई करो. फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो. ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के बाद हाफ एंगल अप्लाई करो. हाफ एंगल अप्लाई करने के बाद वापस ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा. उसके बाद कॉमन निकलेगा और फिर वापस ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा. एंड दिस इज हाउ यू गेट योर answer. So students, I hope you understood what are the steps of solving sums based on this part. Yes, now let's move on to the next question. And what is the next question, students? So our next question is, in triangle ABC, prove that sin square A plus sin square B minus sin square C is equal to 2 times sin A into sin B into sin C. So students, how will you solve that? Now I have clearly mentioned कि आप ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूला अप्लाई कब कर सकते हो? ओनली व्हेन इट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC. If you are given such question, then only you can apply, you have to apply triangle law formula. Otherwise you cannot apply triangle law formula. So let's solve this question. Let us consider left hand side. Now when we consider left hand side, what is given on our left hand side? Sin square A plus sin square B minus sin square C. Now if you see your left hand side, यहाँ पे terms square में है. If you see your right hand side, यहाँ पे terms single form में है. तो कैसे solve करेंगे? Now students, as I mentioned earlier, this type of part of trigo or questions, it is completely based on your trigo formula. अगर आप trigo formula आपका strong है, then only you will be able to solve sums. Now ऐसा कौन सा ट्रिगो फॉर्मूला है जहां पे साइन स्क्वायर को हम सिंगल टर्म में ले आ सकते हैं? जब भी साइन स्क्वायर पहले दिमाग में आता है, द फर्स्ट थॉट, द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच कम्स इनटू आवर माइंड इज आइडेंटिटीज. बट इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, वो तो चाहिए ही नहीं. सो आइडेंटिटीज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ ऐसा दूसरा कौन सा फॉर्मूला है जहां पे हम साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं? सो इफ यू सी प्रॉपर्ली, एक फॉर्मूला था 1 माइनस cos 2 थीटा is 2 sin square theta, half angle formula. So can we write sin square theta as 1 minus cos 2 theta upon 2? That means, can we replace sin square A with 1 minus 1 minus cos 2A upon 2? Similarly, sin square B को लिख सकते हैं 1 minus cos 2B upon 2. And let's keep this minus sin square C as it is. Now 1 by 2 plus 1 by 2, वो तो 1 मिल गया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा cos 2A प्लस cos 2B माइनस sin square C. आई होप ये स्टेप समझा. क्या किया? 2 को स्प्लिट कर दिया, 1 by 2 प्लस 1 by 2 1 हो गया, cos 2A प्लस cos 2B, माइनस साइन कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में प्लस डाल दिया, बट अलोंग विद दैट होल अपॉन 2B आएगा. करेक्ट? सो या तो ये अंदर लिख लो या तो ये 1 by 2 बाहर लिख लो. करेक्ट? नाउ व्हाट इज cos plus cos? Cos plus cos is 2 cos cos. So यहाँ पे हमें मिलेगा 1 minus 1 by 2 into cos plus cos 2 cos cos. So 2 cos 2A plus 2B by 2 into cos 2A minus 2B by 2 minus sin square C. Now students, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो गया,
2a प्लस 2b/2 a प्लस b हो गया, 2a माइनस 2b/2 a माइनस b हो गया. सो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 1 माइनस cos of a plus b into cos of a minus b minus sin square c. नाउ स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो आफ्टर डूइंग दिस मच, द नेक्स्ट स्टेप इज cos a माइनस बी तो कुछ नहीं कर सकते, बट cos a प्लस बी को कुछ तो लिखेंगे. सो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा? सो यहां पे cos a प्लस बी होगा sin स्क्वायर सी, sin c. नाउ this cos a plus b will become what? This cos a plus b will become sin c. Now what should be the next step? Now students, can we write this as 1 minus cos of a plus b is minus sin c into cos of a minus b minus sin square c. Now let us take sin c common. So when we take minus sin c common, हमें मिलेगा 1 minus sin c into cos of a minus b plus sin c. Now students, what is this sin c? So अगर आप ध्यान से देखोगे, sin c को अगर हम वापस ट्राइंगल लॉ में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सो यहां पे हमें मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी. बट स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेप जरूरी है? क्या ये स्टेप नेसेसरी है? चेक करो. नहीं. क्यों? बिकॉज यू डोंट नीड टू डू दिस स्टेप, बिकॉज इफ यू सी प्रॉपरली you have 1 and minus sine square c. So instead of doing this 1 and minus sine square c, can we write this as cos square c using our identities? Now when you see 1 minus sine square c is cos square c, cos a plus b into cos a minus b. क्या cos a plus b का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? सो cos a plus b का फॉर्मूला बनता है cos c. सो इंस्टेड ऑफ दिस we will keep cos a plus b as it is. Correct? It is all about your formula. So यहाँ पे मिलेगा cos square c minus of minus cos c. So plus cos c into cos of a plus b. Now students, can we take cos c common? तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos c plus cos of a minus b. Now once you get this much, what is cos c in triangle law? So cos c in triangle law is minus of cos a plus b. तो यहां पे मिलेगा cos c into cos of a minus b minus cos of a plus b. This is what? This is your defactorization form. So from this, what do we get? We get cos c into 2 times. What is cos a minus b minus cos a plus b? It is 2 sin a sin b. So this will be 2 sin a into sin b. So ultimately मिलेगा 2 sin a into sin b into cos c. What is your right hand side, students? Check your right hand side. So right hand side is 2 sin a sin b and nothing but cos c. So this is what your right hand side is, hence proved. Now students, there was a little error in your question. यहाँ पे it is basically cos c and not sin c. So this is a little change in your question. So students, I hope you understood how to solve this. Yes. Can we move on to the next question? So what is our next question? Our next question is, in triangle ABC, prove that cot A cot B plus cot B cot C plus cot A cot C is equal to 1. And how do you solve this? So students,
In this case we are already given in triangle ABC, यहाँ पे mention किया है. So let's consider this triangle in triangle ABC. Now we all know that a plus b plus c is equal to pi. Sum of angles of triangle is 180. So can we write a plus b is equal to pi minus c? Now if a plus b is equal to pi minus c, let us introduce tan on both sides. So we get tan of a plus b is equal to tan of pi minus c. Now what is tan of pi minus theta? Pi 180 minus theta. Which quadrant? Second quadrant. Second quadrant tan is negative. So tan of pi minus c is minus tan c. So from this we get minus tan c. And what is tan a plus b formula? It is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Itna mila. Now let us rearrange these terms. So we get tan a plus tan b is equal to minus tan c plus tan a into tan b into tan c. Once you get everything in terms of tan, what is the next step? Now students, the next step here will become what? So the next step here will become tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. Now, what is the next step? Let's take this tan A into tan B into tan C on our left hand side. So when we take it on our left hand side, we get tan A plus tan B plus tan C whole upon tan A into tan B into tan C is equal to 1. Now students, what should be the next step? See your question. Question में क्या पूछा है? Question में we are supposed to prove cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A is equal to 1. Now we are getting answer or terms in tan. So what should be the next step? So let's split the denominator. So यहाँ पे जब denominator को हम split करते हैं, हमें मिलेगा tan A upon tan A into tan B into tan C plus tan B upon tan A into tan B into tan C plus tan C upon tan A into tan B into tan C, which is equal to 1. Now if you see this, यहाँ पे tan A gets cancelled, यहाँ पे tan B gets cancelled, यहाँ पे tan C gets cancelled. So the next step which we get is 1 by tan A 1 by tan B into tan C plus 1 by tan A into tan C plus 1 by tan A into tan B is equal to 1. What is the relation of tan and cot? The relation of tan and cot are they are reciprocal of each other. That means हमें मिलेगा cot B cot C plus cot A cot C plus cot A cot B is equal to 1. And when you rearrange this term, students, we get cot A into cot B plus cot B into cot C plus cot A into cot C is equal to 1, hence proved. And this is how we solve our sum. So students, I hope you understood how to solve this. There are few sums जहाँ पे ना LHS लेना है ना जहाँ पे RHS लेना है. We have to find, we have to solve, we have to get by some other method, and this is the shortest method possible. So students, I hope you understood how to solve this sum, right? Now, what should be the next term?
Now students, before moving to the next part, let me remind you that again, if you are strong with your formula, you can create wonders, you can make wonders. So my only thing is make your formula strong. अगर आप आपके formula strong करते हो, then you can solve any sum you want. Now, let's move on to the next question, students. So the next question is, in triangle ABC, prove that tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2 is equal to 1. Now, students, how do you solve this? So, again, you have tan of sums, right? So, what we will do is, you are mentioned in triangle ABC. So, in triangle ABC, if they have mentioned, that means, let us consider triangle. In triangle ABC, and we all know that in triangle ABC, sum of angles of triangles is what? 180. So, A plus B plus C is equal to 180. Now, if A plus B plus C is equal to 180, or you can say pi, can we write A plus B is equal to 180 minus C? Or if you want, you can write pi minus C. Now, if you see a question by 2 चाहिए, हमारे पास by 2 नहीं है, let's divide both sides by 2. So we get A plus B by 2 is equal to 90 minus C by 2. Now, let us introduce tan on both sides. So, when we introduce tan on both sides, हमें मिलेगा tan of A plus B by 2 is equal to tan of 90 minus C by 2. What is tan 90 minus theta, students? Tan 90 minus theta is nothing but cot theta. So, यहाँ पे मिलेगा tan of A plus B by 2 is equal to cot of C by 2. Now, what is the formula of tan A plus B by 2? Now, students, instead of writing tan of A plus B by 2, let me write it in a simple form, tan A by 2 plus B by 2. अभी इसे देख के किसकी याद आई? Yes, students, tan A plus B formula. What is tan A plus B? Tan A plus tan B whole upon 1 minus tan A tan B. So, instead of cot C by 2, can we write it as 1 by tan C by 2? Make use of the relation, students. So left hand side में expand करो तो ये मिलेगा tan of A by 2 plus tan of B by 2 upon however you meant 1 minus tan A by 2 into tan B by 2 is equal to 1 upon tan C by 2. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए? हमें सिंपल फॉर्म में चाहिए. सिंपल फॉर्म में चाहिए तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट tan of A by 2 into tan of C by 2 plus tan of B by 2 into tan of C by 2 is equal to 1 minus, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, equals to 1 minus tan of A by 2 into tan of B by 2. So let's take this tan A by 2 on our left hand side. So we get tan of A by 2 into tan of C by 2 plus tan of B by 2 into tan of C by 2 plus tan of A by 2 into tan of B by 2 is equal to 1. So now when we rearrange this term, we get tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan A by 2 into tan C by 2 is equal to 1, which is nothing but the question which you are supposed to prove. And this is how you solve your sum.
So students, I hope you understood how to solve this. I hope you liked how I have solved this. So students, that's all for today's session. I hope you enjoyed today's session. I hope you liked today's session. I hope it was easy, interesting, and knowledgeable. Now students, again a gentle reminder, अगर आपको ट्रिगो स्ट्रॉन्ग करना है, as I have mentioned earlier, if you are strong with your formula, आपको फॉर्मूला याद रखनी है. कौन सी फॉर्मूला कब कैसे कहां यूज होगा वो अपने आप सम देख के स्ट्राइक हो जाएगा. बट फॉर दैट यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला. यू कैन नॉट कीप एनी फॉर्मूला इन ऑप्शन. जैसे कि cos 2 थीटा की 4 फॉर्मूला है, यू कैन नॉट से कि मैं 4 में से 2 ही फॉर्मूला लर्न करूंगा, 2 को ऑप्शन में छोड़ूंगा. नो, नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज आई हैव मेंशन कौन सी फॉर्मूला कब कैसे कहां क्यों यूज हो जाए हमें नहीं पता. करेक्ट? सो this is the reason you have to learn all trigo formula, and the main thing of remembering learning trigo formula is it will help you for other topics also. So students, what you have to do, download Eduauraa app. There is a 14 days free trial. Watch videos, solve sums, make your subject strong. Whatever doubts you have, you send us. We will clear doubts as soon as possible. And this is Arpan Ashar signing off for the day. Enjoy.